We are live now, sir. Okay. So, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Good morning to all present here on this virtual dais. Today's resource person, Mr. Pandurang Jalkote, our principal sir, Dr. Sanjay Bokade sir. Sorry, 1 minute. Head of Mechanical. I, Rajesh Kale, on behalf of MCT's Rajiv Gandhi Institute of Technology and Department of Mechanical Engineering, welcome you all for the last day, first session of AICT AQIS sponsored online 1 week short-term training program. Topic for this morning session is PAT mechanism of Bureau of Energy Efficiency for industries and roles of energy managers and auditors. It is my privilege to introduce our today's resource person, Mr. Pandurang Jalkote sir. He is energy efficiency expert at Adani Mumbai Electricity Limited, Dahanu Thermal Power Station, Dahanu. He is additional vice president at Adani at DTPS Dahanu, and has completed his education from Babasaheb Ambedkar Technological University, Babasaheb Ambedkar Technology University, Marathwada. He has received patent in electrical isolator testing jig, control and instrumentation testing kit. He also has 3 copyrights in energy deviation report, coal steel automation, air fuel ratio, and boiler suit blowing. I welcome you, sir, and thank you for joining us for this morning session. I request you to enlighten us with your words of wisdom. Thank you so much, sir. I request Jalkote sir to start his session. Thank you. Thank you, sir, for your kind words. I will going to share the PPT, sir. Yes, sir. So PPT is visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Yeah. Thanks, welcome one and all, and thanks for giving me opportunity to share my knowledge and experience on this platform. Basically, this is maybe a new subject somebody and somebody know also, but we'll discuss in detail. That is perform achieve trade, that is a PAT mechanism of Energy Conservation Act 2001, role and responsibilities of the energy manager and auditors. What is this? Can I, sir, take a privilege to communicate in English, Hindi and Marathi, all 3 languages, wherever possible? Kale sir, please. Yes, sir. No problem. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Yes. What is these 3 things? That is, I know you all are right. That is a parachute, and this is a umbrella, and third one is a human mind or brain. सर हम लोग सब जानते हैं ये कब काम करेगा? These 3 things will work when they are open. ये 3 चीजें तब काम करेगी जब ये खुले हो. That's why I request to all gurus here to be attentive, and any question in between or any doubt you can ask. I request you can welcome. We will discuss on that. I will clear in that spot only. Second thing I want to share here, knowledge is a power. We all know. हम लोग सब जानते हैं knowledge is a power. I think all are agree here, but I'm a not agree. I'm a disagree. Why? Knowledge is not a power. Knowledge is only potential power, but it transforms itself into actual power
the moment we all decisively act on it. That's why it's very important to use or to act this knowledge in our day-to-day work, in our self, for our family members, our society, wherever you're working, and for our nation building. That's why it is necessary. टाल-मटोल नहीं करना है. Normally it happens. Not sure, somebody आज करेंगे, later, tomorrow, not yet, another day, next week. The less we think about doing something, and the faster we just get on with it. The fewer problems we cause ourselves. Good planning is always helpful, but time spent fretting and forecasting is a major drain of our own energy. That's why it's very important to keep our energy level also high to start doing. That's why one day or day one, which we prepare. We should, because one day kabhi nahi aayega. Day we start day one. That is, you decide, we all decide, own our life from day one itself. Today's learning objective, that is PAT mechanism, market design, institutional design, and the role and responsibilities of energy manager and auditor. Content we are going to cover today, that is introduction, PAT overview, origin of PAT, what is PAT, PAT mechanism, market design, institutional design, energy saving certificates, trading process. Any idea regarding the PAT from the anyone can open, please? Any idea, basic idea regarding PAT? Anyone? See, basically, this is a perform, achieve, and trade mechanism. PAT is a market-based mechanism to enhance the energy efficiency in energy-intensive industries through certification of energy saving, which can be traded. PAT means हम लोग बोलते हैं कि जो शाबाश की, उसी तरह ये एक जो एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री जो है, these are basically under the Energy Conservation Act 2001 and subsequently amendment happened in 2010. And this is a part of National Mission for Enhanced Energy Efficiency, NMEEE. The perform, achieve, and trade is a market-based mechanism to reduce the specific energy consumption in energy-intensive industries. This is facilitated through the trading of energy-saving certificates, which are used to those plants who have overachieved their targets. Underline this sentence. This is facilitated through the trading of energy-saving certificates, which are used to those plants who have overachieved their targets, and those plants who were underachieved of their targets are entitled to purchase energy-saving certificate. Here I can add this. This is a PAT mechanism. At this time is specific sectors only. Tomorrow maybe it is applicable to each and every buildings. I mean to say our college campus also. That's why it is this subject is a very important to understand today what is happening development in India under Energy Conservation Act 2001. The first cycle of PAT was completed in March 2015, that is in the financial year 14-15. Thereafter, verification of the performance of
designated consumers. We will see what is the designated consumers and energy intensive industries and sectors in subsequent slides. Designated consumers with regard to energy savings and based on recommendations made by Bureau of Energy Efficiency, the Ministry of Power issued 38.24 lakh approximate energy saving certificates to 306 designated consumers on 16th February 2017. Means PAT cycle 1 already successfully completed in India under Energy Conservation Act 2001, and now there is a PAT cycle 2, 3, 4, 5, 6 already in place. And around 110 designated consumers have been entitled to purchase 14.23 lakh approximate energy saving certificates. The designated consumers have contributed to the success of PAT cycle and this cycle has witnessed an energy saving of 8.6 million tons of oil equivalent. We'll see what is the how it is the you can conversion factor of million tons of oil equivalent, 1 ton million ton of equivalent against the targeted energy saving of 6.886. Means under this mechanism, Government of India targeted to save 6.886 million ton of oil equivalent, but actual implementation of this, so we have achieved this 8.67. This is the one of the proud, you can say, because this mechanism already going in a developed country also, but they are not successful. After successful of this PAT cycle 1, the other countries are also interested to know what is the how it is implemented successfully in India. The energy saving is equivalent to 31 million tons of CO2 emission reduction. Just imagine in the PAT cycle 1, India achieved 31 million tons of CO2 emission reduction and monetary saving of around 37,685 crores, which increased investment of 24,500 crores. Means in the PAT cycle 1, that is year 2012-13, 13-14, 14-15, this identified 8 sector energy intensive industries invested around 24,500 crores and saving of around 37,685 crores. And the CO2 emission reduction is 31 million tons of CO2. For the trading of research, Central Electricity Regulatory Commission. See, क्या है कि सेंटर में एक रेगुलेटरी कमीशन है, that is it is called Central Electricity Regulatory Commission, and state wise regulatory commission, for example in Maharashtra, that is MERC, Maharashtra Regulatory Commission is there. The trading of this research is a ECERC is a market regulator for this scheme, and Bureau of Energy Efficiency is an administrator. And POSOCO means Power System Operation Cooperation Limited, has been appointed as a making designated consumers as eligible entity. Means what is the difference? And that is suppose you are achieved, overachieved or underachieved your target, to participate in the trading mechanism, you should become a eligible entity. You are already a designated consumer, but to participate in the exchange, that is power exchange, to buy or to sell your energy saving certificates, you should become a eligible entity. For that, there is a separate mechanism, and you can fill the form. I will show that example of that format. There are 2 power exchanges nowadays. ये जो पावर एक्सचेंज है ये एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट ट्रेडिंग के लिए, दैट इज IEX एंड PXIL. आप जानते हैं कि जो मार्केट में ये 2 एक्सचेंज फॉर द पावर ट्रेडिंग के लिए भी जाने जाते हैं, और समझो किसी का पावर रिक्वायरमेंट है, वी कैन बाय दिस ओपन मार्केट फ्रॉम दिस 2 exchanges.
ESCerts shall take place. CERC has already approved the procedure for transaction of energy saving certificates, that is ESCerts, on 14th February 2000. Means there is a guidelines how to there is a step-by-step procedure for the trading of these certificates. Then come to the question, the origin of PAT. इसका birth कहाँ पे हुआ, इसका initiation कहाँ से है? In response to dual need to enhance energy availability for GDP growth and action to fight against climate change, Prime Minister, that time our Honorable Prime Minister announced National Action Plan on Climate Change, that is NAPCC. Under this National Action Plan on Climate Change has 8 key missions. We'll see what these 8 key missions. That is, first one is a national mission for the enhanced energy efficiency. Second mission, national solar mission. Then third is a national mission for strategic knowledge for climate change. And fourth one is a national mission for the sustainable agriculture. Fifth one is a national mission for a green India. And this next one is a national mission for the sustainable habitat, national waste mission, and the last one is the national mission for the sustaining the Himalayas ecosystem. These are 8 initiatives under National Action Plan on Climate Change, and PAT is a part of National Mission for Enhanced Energy Efficiency, that is NMEEE. We are looking today the PAT cycle under this National Mission for Enhanced Energy Efficiency. The nodal agency for this is a Bureau of Energy Efficiency, that is B at the central level, and at the state level, that is SDS, that is State Designated Agency. In the Maharashtra, the word the agency can heard the MEDA, that is Maharashtra Energy Development Authority. In Gujarat, that is JEDA, Gujarat Electricity Development Authority. Accordingly, each state designated a state designated agency by government, that respective state governments, to monitor, control, and implement this scheme in the state. National Mission for Enhanced Energy Efficiency, that is NMEEE, being a key component of NAPCC, reflects Government of India's emphasis on achieving energy efficiency in Indian economy. It puts 4 new initiatives to enhance energy efficiency in the country. We'll see in detail. That is under NMEEE. The first initiative is the Energy Efficiency Financing Platform, a mechanism to finance demand supply management, that is DSM programs, in all sectors by capturing future energy saving. And the next initiative is, that is we are looking today in detail, that is PAT, Perform, Achieve, and Trade. And this is a market-based mechanism to enhance cost effectiveness of improvements in energy efficiency in energy intensive large industries through certification of energy saving that could be traded. Market-based, that is next third initiative is a MTEE, market-based transformation for energy efficiency, accelerating the shift to energy efficient appliances in designated sectors through innovative measures for make the product more affordable. And the last initiative under this NMEEE is that is FMEED, that is Framework for Energy Efficiency Economic Development, developing physical instrument to promote energy efficiency in the India. Now we are mainly focusing on the PAT, that is the second number initiative. As I said, जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं शाबाश की,
कोई भी इंडस्ट्री सपोज डूइंग वेल अच्छा काम कर रहे हैं एनर्जी एफिशिएंसी और एनर्जी कंजर्वेशन में, they will get the reward over their achievement, and those who are underachiever, they are penalized. I want to clear here the main motto of this PAT under Energy Conservation Act, not to penalize anyone. The main motto is to promote energy efficiency, energy conservation effectively in India. The administrator is set target and compliance period. Designated consumers, that is 8 sectors. This is for PAT cycle 1. Basically, these 8 sectors under PAT cycle 1 and around 478 units, and that is designated consumers identified in PAT cycle 1. The sectors are, that is power, thermal power or power plants, steel, cement, fertilizer, pulp and paper, textile, aluminum, solar alkali. These are sectors identified in the PAT cycle 1, and 478 is a designated consumer. So we'll see what is the meaning of designated consumer, and what is the target or threshold limit given for that. Then auditing agency independent monitor, verify and certify. In the assessment here, there is a separate impelled energy auditing accredited energy team is there. That team is identified by the Bureau of Energy Efficiency, uploaded the list of team on their website. You can choose from that list itself. There is a different procedure for each and industries to how to give a, you can say the work order or procurement PO. That is a different, but you have to choose from that list only. Marketplace is a transaction of energy efficiency instrument in the exchange. These are the under this PAT. These are the 3 major steps. That is target, setting targets on the basis of current specific energy consumption, set compliance period, may take into account location, vintage, technology, raw material, and product mix. And the second stage of process is a monitoring and verification of targets by designated energy auditors. Check if designated consumers has achieved targets. Under achievement, obligation to buy energy saving certificates or pay penalty. The underachiever has a choice to buy the energy saving certificates from the market. Otherwise, there is a penalty under this Energy Conservation Act. There is a provision of penalty. I will detailed in subsequent slides. Overachievement, that is who has achieved more than given their target, that is called overachiever or gain side. Issuance of energy saving certificates for banking for latter use or trade. Here is a facility for overachievers. They can trade it immediately at the same PAT cycle, or they can bank it for their respective next cycle. Then trading of energy saving certificates, participation by designated consumer on platform provided by power exchanges. That is presently there are 2 power exchanges, and maybe there is upcoming power exchanges in India. Then symmetrical flow of the information. This is how the market-based mechanism of PAT. Now we'll come to the key steps in the PAT mechanism. Baseline study. Before that, stakeholders consultation done by the Bureau of Efficiency. I closely involved. I appreciate the initiation of the Bureau of Efficiency. They have in region-wise, they have conducted a lot of seminars, workshops, and also SDA in the Maharashtra Energy Development Authority has also conducted this consultation, and they take stakeholders' comments and concerns and hearing and decisions, and they have come to conclusions. And
set a frame for this mechanism. That is baseline study, first step. Assessment of energy consumption and specific energy consumption. Establishing baseline energy consumption norms. And then in the target setting energy efficiency targets, defining compliance period also for the each PAT cycle. Then market design, scheme, participants, market structure and overall process, liquidity, tradability and fungibility. The regulator can see these all aspects and trading cycle. Institutional design, scheme, participants, what is the roles and responsibility, they are identified. Implementation and registration of eligible entity or energy efficiency project. Then monitoring, verification and recheck or issuance of energy efficiency certificates, trading or redemption of energy efficiency certificates. Then regulatory framework, draft regulation governing the overall PAT mechanism that is already in place, and regulations, final regulations and detailed procedures for this PAT mechanism. Why market-based mechanism? Here are some outcomes. Allow quantification of volatile and not to measurable energy efficiency. Market-based energy efficiency instruments serve as an accounting tool to demonstrate that certain amount of energy has been saved. The purpose of this, as I told, this is not for penalize anyone. It is to provide information guidelines to promote an awareness of energy efficiency, energy conservation in India, offer alternative to pure obligations of achieving energy efficiency, reduce cost of compliance to energy efficiency targets, greater flexibility, serve as an additional source of revenue for the overachievers. This is a additional source of revenue. यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि for implementing this energy efficiency, energy conservations, you have already achieved, means you have saved or optimized your energy cost or your production cost in your industries. But by overachieving, you can source of earning some revenue from this mechanism. Then come to the designated consumer. As per Energy Conservation Act 2001 Clause 14 E, specify having regarding to the intensity or quantity of energy consumed and the amount of investment required for switching over to energy efficient equipments and capacity or industry to invest in it or availability of the energy efficient machinery or equipment required by the industry, any user or class of users of the energy as a designated consumer for the process of this act. As I told, any user, any class or users of energy, the Bureau of Energy Efficiency under Ministry of Power identified in PAT Cycle 1 energy intensive industries and the designated consumers depending on the threshold energy consumption level, and at they are for every cycle Bureau of Energy Efficiency deepening and widening. Deepening means in the same sector they are again finding out the designated consumers depending on the threshold level consumption. Widening means they are widening the sectors too. I will show in details how widening and deepening by giving the sector-wise example of the these designated consumers. Now these are the designated consumer sectors. That is the thermal power plants, cement industries, solar alkali, petroleum
and refinery, fertilizers, iron and steel, textile, aluminum, railways, discom, that is a energy, electricity distribution companies, pulp and paper, commercial buildings and hotels, petrochemicals, now the airports also. These are the sectors under designated consumers. Then this slide is a very important to understand those who are disease, that is designated consumer. It is decided on the threshold energy consumption level, that is metric ton of oil equivalent. This numbers is giving this much or more than this. For example, in a thermal power station, the threshold limit is 30,000 metric ton of oil equivalent or more. This is the threshold limit for the thermal power plants. And again, for fertilizers, it is 30,000 metric ton of oil equivalent. Then for the cement industry, it is 30,000 again. And for the grinding units in cement industries, that is 10,000 metric ton of oil equivalent. Iron and steel 30,000, solar alkali 12,000, aluminum 7,500, textile 3,000, pulp and paper. Means these are the sectors. Under the sector, those units or plants. For example, suppose we take the textile. In the textile industries, those textile units are consuming 3,000 and more metric ton of oil equivalent energy. They are identified as a designated consumers. Below that, no designated consumers. This is I can say the as today's or latest figures they have misidentified. And for the petroleum and refineries, that is 90,000 metric ton of oil equivalent or more. Electricity distribution companies, that is 86,000 metric ton of oil equivalent. Railways, all zonal railways, that is traction or diesel, that is 70,000. Workshops 750. All 8 production factories of railways 750 again. Commercial buildings and establishment 1,000 metric ton of oil equivalent. Hotels 500 and airports. These are the yearly consumption figures. Please note that this much of energy, suppose they are consuming in the year or more than this, they are identified as a designated consumer in these sectors. Then come to the designated consumers under Energy Conservation Act 2001. Direct any designated consumer to designate or appoint energy manager. These are the requirements. Suppose if you are identified as a designated consumer as per Energy Conservation Act 2001, this is a requirement. You can designate or appoint a separate energy manager to each location. Suppose I can give the example. Suppose as a campus of suppose you are a designated consumer of any institute at the location of Pune, and same under the same banner or under the same name, there is a one college in Pune itself at a different location, but both are consuming their threshold limit. Means you can designate separate energy manager for each location. एक ही एनर्जी मैनेजर नहीं चलेगा सभी लोकेशन पे, और there should be subsequently prescribed minimum qualification for energy managers to be designated or appointed under clause I of section 14. Means energy manager appoint होगा
वो ऐसा नहीं कि कोई भी आप अपॉइंट कर सकते हैं, नो, देयर इज अ मिनिमम क्वालिफिकेशन. Bureau of Energy Efficiency and the Ministry of Power there is a energy manage certification of energy manager and auditors. अगर आप फर्स्ट 3 पेपर दे रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, देन यू आर सर्टिफाइड एज अ एनर्जी मैनेजर, वो आप अपॉइंट कर सकते हैं. अगर 4 पेपर क्लियर हो रहे हैं 1 2 3 4, देयर सर्टिफिकेशन इज एनर्जी ऑडिटर. एनर्जी ऑडिटर कैन वर्क एज एनर्जी मैनेजर, उसको भी आप अपॉइंट कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो फर्स्ट 3 पेपर क्लियर किया. बट ऐसा नहीं कि इस क्वालिफिकेशन 4 पेपर में फर्स्ट 2 पेपर आपने क्लियर किया और लास्ट पेपर क्लियर किया तो भी आपको कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा. तो फर्स्ट 3 पेपर 1 2 3 क्लियर करना बहुत जरूरी है, और पेपर 4 भी आप क्लियर करते हैं तो यू आर एनर्जी ऑडिटर आल्सो. And under clause 14I, submit a report in the form of manner as may be prescribed on the status of energy consumption at the end of the every financial year to designated agency. Under this act, there is a provision. Each and every identified designated consumer can submit. जैसे आप टैक्स रिटर्न भर रहे हैं ईयरली, ऐसा आपको ईयरली एनर्जी रिटर्न भी भरना है. And now there is a separate PATNet portal is online का सब फैसिलिटी है, अब ऑनलाइन आप भर सकते हैं. Then enabling the framework, Energy Conservation Act, designated consumer to comply with the specific energy consumption norms. ये हमने देखा कि under NAPCC there is a NMEEE, under NMEEE these 4 initiatives, and we are looking the first one, perform, achieve and trade. Nationally determined contribution indices, emission intensity reduction by 33 to 35% against 2012. This is our target to reduce 33 to 35% emission level from the 2005 till और 2030 तक हमको ये रिडक्शन करना है 2005 के लेवल से. This is a PAT cycle process in detail. That is a boundary setting, then establishment of baseline. Baseline establish होगा या baseline fix होगा by the data collection के ऊपर, उसके ऊपर Bureau of Energy can fix the baseline. Then target setting. Basically this PAT cycle is a 3-year cycle, and target setting it is जब baseline fix होगा it is called baseline year, and the target, the assessment, the achievement year जो भी target year है, that is called the assessment year. We'll see the cycle wise कैसा कौन सा year baseline है, कौन सा year assessment year और कैसा floor है. Then after that, after completion of your cycle in that is assessment year, then there is a monitoring, verification and reporting. Then energy audit, form 1 and normalization. क्या normalization हम लोग डिटेल में देखते हैं, normalization क्या है. Verification and cross check. Reporting processes, that is there is defined formats. इस फॉर्मेट में ही आपको डाटा भरना है, डिफाइंड फॉर्मेट है अंडर कंजर्वेशन एक्ट 2001. सेक्टर वाइज ये फॉर्मेट्स थोड़ा सा अलग है, जैसे कि जो सेक्टर का एप्लीकेबल डाटा चाहिए उसके हिसाब से फॉर्मेट बना है. दैट इज फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म ए बी सी डी. फॉर्म डी मींस जब आपका ट्रेडिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा, आप कंप्लाई करते हैं, उस वक्त फॉर्म डी भर के आपको डिक्लेरेशन देना है. अगर आप ओवर अचीवर है, आपको कुछ सर्टिफिकेट्स मिले हैं, तो भी आपको फॉर्म डी भरना है. और आप अगर अंडर अचीवर्स है, आपने कुछ एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स लेके आपने कंप्लाई किया, तो भी आपको फॉर्म डी भरना है. अगर आप ट्रेडिंग नहीं किया, ओवर अचीवर्स है और बैंकिंग किया है, तो भी आपको फॉर्म डी भर के आपका प्रोसेस कंप्लीट करना है. ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें अगर कोई भी मिस होता है तो देन यू आर नॉन कंप्लाइड, आइडेंटिफाइड एज नॉन कंप्लाइड, जो भी उसके हिसाब से डायरेक्शन से ब्यूरो ऑफ एफिशिएंसी अंडर प्रोविजन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 और एसडीए कैन एक्ट ऑन इट. देन इश्यू ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स. डिपॉजिटरी और
रजिस्ट्री फंक्शंस, दैट इज जो हम लोगों ने बात किया कि ट्रेडिंग में जो भी CERC एंड पोसो को मेजर रोल कर रहे हैं ट्रेडिंग सिस्टम में, बुक कीपिंग ऑफ एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स ट्रांजेक्शंस, देन मार्केट मैकेनिज्म फॉर ट्रेडिंग एंड एनफोर्समेंट ऑफ कंप्लायंस। इसके हिसाब से जो भी कंप्लाई किया और जो भी फाइंड आउट एज कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, जो पेनल्टी क्लॉज उनको अप्लाई होगा एज पर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। These are normally reporting formats. There is a detailed प्रोसेस और जो प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं ब्यूरो एनर्जी एफिशिएंसी के साइट पे, और जो डेजिग्नेट कंज्यूमर है उनको ये जो बुकलेट या सॉफ्ट कॉपी ऑलरेडी मिल चुके हैं। यू कैन गो थ्रू इन डिटेल्स। देन नॉर्मलाइजेशन, इंटीग्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, अडॉप्शन एंड इवैल्यूएशन, ये सब चीजें पैट इवैल्यूएशन के अंडर आ रहे हैं। देन कब टू ये कैसे स्टार्ट हो गया, दैट इज अ जनरल, यहाँ पे इस स्लाइड से आपको क्लियर हो रहा है। दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 इनएक्टेड इन 2001। देन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज रिलीज इन द अर्ली 2008 और एंड ऑफ 2007। नेशनल मिशन फॉर इनहांस एनर्जी एफिशिएंसी NMEEE, जो भी इनिशिएटिव वहां पे बना। Nationwide consultation workshops and organized by the Bureau of Efficiency for the information and the guidelines to the stakeholders. Sector studies for the identification of designated consumers. Sector wise study किया है इन डिटेल्स में कि कौन सा एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, और वहां पे इन दैट एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज और सेक्टर, those who are the designated consumer as per the threshold limit we have seen in last slides. Then baseline data collection begins. NMEEE approved by Prime Minister's Council on Climate Change by end of 2019. Sector studies commissioned to the identified disease. Financial outlay approved. Then there is a amendment in the Energy Conservation Act 2001 in 2010. Then consultation on target setting methodology and targets in 2011. Then the first cycle of PAT, that is perform achieve trade, is in 2012-13. There is a 3-year cycle, that is 2012-13, 13-14 and 14-15. And 14-15 is an assessment year for that PAT cycle 1. Then performance verification. After completion of this cycle, after March 31st March 2015, before 90 days, means by end of June, this process to be completed. That is verification, then monitoring verification, फॉर्म ई फिलिंग सभी उसको जो भी फॉर्म्स आइडेंटिफाइड है उसकी में सब डिटेल्स आपको देना है। देन उसके हिसाब से आपका आगे का प्रोसेस हम दो के लिए थे, आगे क्या क्या प्रोसीजर है इसमें और रिजल्ट्स कैसा इशू किया जाता है और ट्रेडिंग किया जाता है। देन in 2016-17 PAT cycle 2 started and PAT cycle 3 started in 17-18. इन डिटेल्स डीसी नोटिफिकेशन कैसा ये फ्लो है ब्रीफ किया है इस स्लाइड में। जो 11 सेक्टर्स नोटिफाइड, अभी तो धीरे धीरे सेक्टर्स भी बढ़ रहे हैं। मिनिमम एनर्जी कंजम्पशन नोटिफिकेशन से 30,000 टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट फॉर द सीमेंट अंडर दिस 11 सेक्टर। देन सेकंड इज डाटा कलेक्शन एंड वेरिफिकेशन, data collection and third party verification for the baseline, fixation of baseline and target. Data collected from the 1,000+ industries in this process with industries, associations, ministries, research bodies, etc. 250+ consultation meeting, workshops and visits are conducted under consultation, and around 70 technical committee or experts discussion, targets
सेविंग पोटेंशियल एंड इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस क्या है उसमें डिस्कशन करके देन देयर इज अ मिनिस्ट्रियल टेक्निकल कमिटी एंड नोटिफिकेशन इज notified for the PAT cycle 1 that is 31st March 2012 470 units in PAT cycle 1. PAT cycle 2 around 621 units. Here see the incremental of the units or designated consumers. It happens due to winding and deepening in the PAT cycle 2. PAT cycle 3 again there is a 737 total units but addition of 116 units. These are the timelines for 3-year cycle for PAT cycle 1, 2, 3. 12-15 is a PAT 1, 16 to 19 is a PAT 2. Then PAT 3 is 17-20. It is the implementation period. Then verification by accredited, that is impelled accredited energy auditor, auditing firm and trading. In the PAT cycle 1, verified around 427 industries in PAT cycle 1. Achievement, verification and ESEX trading. How these designated consumers are grouped. See in detail in the textile, depending on the different process, that is spinning, processing, composite and fiber, these all grouped in the textile in one group. And in the thermal power plant, you know the coal-based thermal power plant, lignite-based, gas-based, diesel-based, these all grouped in the thermal power plants. Then cement plant based on the major products or production of the cement, that is PPC, OPC, PSC and bed plant. It is grouped in the cement plants. This is how grouping has been happened. Now come to know the what is the gate to gate concept. From this slide it is clear that suppose this is your plant boundary, जो भी एनर्जी एक बार डेजिग्नेटेड आप कंज्यूमर हो गए इन डीसीस के बाउंड्री में, जो भी एनर्जी इन हो रहे, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो या फ्यूल ऑयल हो, कोल हो या अदर जो भी फ्यूल है, या वो सभी जो एनर्जी का कंजम्पशन अगर आपका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उतना है तो आप डेजिग्नेटेड कंज्यूमर है। ये सब एनर्जी इन हो रहे, यहाँ पे आपका प्रोसेस हो रहे, जो भी इंडस्ट्री हो, चाहे पावर प्लांट हो, टेक्सटाइल हो, सीमेंट हो, सोलर अल्कली हो या रिफाइनरी हो या रेलवे हो, जो भी प्रोसेस हो वो यहाँ पे प्रोसेस हो रहे हैं, एंड जो प्रोडक्ट में जो आउटपुट मिल रहा है, स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन इक्वल टू दैट इज एनर्जी इनपुट एंड प्रोडक्ट आउटपुट। ये एनर्जी स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन यहाँ पे मेजर करके उसी हिसाब से बेसलाइन और आपका टारगेट ईयर फिक्स किया गया है। This is general specific energy consumption, that is year 1, year 2, year 3. This is a baseline specific energy consumption and this is the target. हम लोग डिटेल में देखते हैं कि किस कंडीशन में आप कंप्लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, how it is happening. Basically, this bandwidth of specific energy consumption within the sector. For example, thermal power plant का अगर सेक्टर लेते हैं हम लोग, तो वहां पे this thermal power plant सेक्टर में आपका स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन मेजर दैट इज नेट ग्रॉस हीट रेट। आपके डिजाइन से जो भी नेट ऑपरेटिंग हीट रेट आज का डेट में, उसका अगर हायर साइड में डिविएशन है फ्रॉम डिजाइन, देन योर टारगेट हायर टारगेट फॉर द इनएफिशिएंट प्लांट्स। अगर लोअर साइड में है, वो बैंड देखते हैं हम लोग 5% टू 10, 10 टू 20 एंड अबाउट 20 जैसा डिफाइन किया है। अगर आपका फ्रॉम द डिजाइन लेवल इफ इट इज एट लोअर साइड deviation then your low target for the energy efficient plants, but at each cycle there is a different target based on they will again see the what you have achieved in the PAT cycle 1, and again from the deviation from your the design data to your actual operating data, then again fix the target for the next cycle. This is the process. See this slide will clear you picture. आप अगर comply कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये slide से बहुत ही clear हो रहा है। यहाँ पे देखिए in the first
section you are compliant means कोई भी industry, suppose this is a during a baseline, this is a fix for the baseline specific energy consumption, and this is depending on the baseline specific energy consumption, there is a target for the specific energy consumption during your assessment year, and this is the actual achieved. Suppose you are achieved, this is your actual achievement. तो आपने अचीव क्या किया है, ये आपका टारगेट था, वी आर ओवर अचीव्ड मींस आपने गेन साइड है, आपको यहाँ तक कंज्यूम करना था, आपने उससे कम कंज्यूम किया मींस आप यू आर ओवर अचीव्ड मींस दिस मच ऑफ पोर्शन कैलकुलेशन with your production and your baseline and target specific energy, वहां पे फॉर्मूला उसके हिसाब से आपका जो भी इसेट्स बन रहे हैं वो इसेट्स आपको ट्रेडिंग के लिए पॉजिटिव साइड में आपको मिलेंगे. आप ये इसेट्स यू कैन ट्रेड आफ्टर at the same cycle or you can bank it for your subsequent PAT cycle. This is all about ये एक नंबर जो भी सेक्टर में आ रहा है. देन सेकंड नंबर, सी दिस इज द अगेन हियर आल्सो यू कैन कंप्लाइड. फर्स्ट इसमें कंप्लाइड किया, सेकंड इसमें कंप्लाइड किया. कैसा, दिस इज योर बेसलाइन स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन एंड यू आर अचीव्ड अंडर अचीव्ड, यू आर अंडर अचीव्ड मींस जो भी आपका टारगेट यहाँ तक था बट आपने उससे ज्यादा कंज्यूम किया है. But as per Energy Conservation Act 2001, there is a facility to buy the assets. आपने यहाँ पे assets purchase करके आपने आपका फॉर्म डी भर के आपने कंप्लाई किया वो पैट साइकिल रिस्पेक्टिव पैट साइकिल. तो इस तरह से आप यहाँ पे कंप्लाइड हैं. Then come to the third, that is trading not required. यहाँ पे भी कंप्लाइड है मींस दिस इज अ बेसलाइन एनर्जी स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन. ये आपका टारगेट था, आपने अचीव भी एग्जैक्टली टारगेट जितना है उतना ही किया मींस देयर इज अ नो प्लस नो माइनस, हियर इज अ न्यूट्रल 0 0 मींस हियर आल्सो यू कैन कंप्लाइड. द लास्ट पार्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. समझो यहाँ पे बेसलाइन स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन स्टडी हुआ था, ये था आपका टारगेट था, ये अचीव करना है टारगेट स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन, बट आपने अंडर अचीव किया मींस जो टारगेट अचीव करना था वो नहीं किया है. बट एट द सेम टाइम आपने अगर इसेट्स ड्यूरिंग द ट्रेडिंग पीरियड आपने इसेट्स परचेस करके आपने अगर कंप्लाई नहीं किया है मींस इट इज वो जो इंडस्ट्री है जो डीसी है वो नॉन कंप्लायंस के लिए एलिजिबल है और उसके हिसाब से जो भी पेनल्टी क्लॉज है उसके ऊपर इम्पोज होगा. तो ये स्लाइड समझना बहुत जरूरी है. तो इसी के लिए ये जो सब्जेक्ट है टुडे दैट इज पैट मैकेनिज्म, जानना क्या चल रहा है लेटेस्ट ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है. हो सकता है कि जैसे सेक्टर वाइडनिंग में ईच एंड एवरी बिल्डिंग ऑल्सो जो भी कैंपस आपका अगर उतना एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है तो आप भी पैट मैकेनिज्म में आ सकते हैं. हियर द डेजिग्नेटेड कंज्यूमर पैट साइकिल 1 एंड 2, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे इन डिटेल, दैट इज in PAT cycle 1 there is only 8 sectors, that is thermal power plant, iron and steel, cement, fertilizer, aluminum, pulp and paper, textile, solar relay and the ये जो 8 सेक्टर थे ये 3 सेक्टर पैट साइकिल 2 में ऐड हो गए हैं. यहाँ पे देख सकते हैं कि द थ्रेशोल्ड लिमिट जो भी है सेक्टर वाइज इज गिवन and in the PAT cycle 1 identified designated consumers. For example, thermal power plant all over India identified 144 thermal power plants. For iron and steel identified 67 units. For the cement 85. For the fertilizers 29. And for the aluminum 10. अब यहाँ पे देख रहे हैं कि PAT cycle 1 में 144 thermal power plant थे. This sector is already identified in PAT cycle 1.
पैट साइकिल 2 में देखिए 154 हो गए, मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, अगेन देयर इज अ डिपनिंग। इसको बोलते हैं डिपनिंग, मीन्स सेम सेक्टर में और कुछ यूनिट्स आइडेंटिफाई किया, ये 154। बट यहाँ पे जो 3 सेक्टर ऐड हो गए, इसको बोलते हैं वाइडनिंग, मीन्स ये सेक्टर एक्स्ट्रा ऐड हो गए इन द पैट साइकिल 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन पैट साइकिल 1 there is a total 478 designated consumers. In the PAT cycle 2 there is a 621. How this is happening, widening and deepening, means हर पैट साइकिल पे आपका वाइडनिंग और डिपनिंग होगा, उसके हिसाब से जो भी नए आइडेंटिफाइड डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स ऐड होते जाएंगे फॉर दिस मैकेनिज्म। देयर इज अ नो दूसरा कुछ अल्टरनेट नहीं है। अगर एक बार आपका सेक्टर और as a DC identify किया, then you should be compulsory in the Energy Conservation Act 2001, आपको लागू होगा ये। Then come to the see the PAT cycle 2, 3, 4 and 5. Here आप देख रहे हैं पेट्रोकेमिकल और बिल्डिंग्स ऐड हो गए हैं सब्सिक्वेंट सेक्टर में। Then PAT cycle 2 में 621 होता है। These are the addition of this 361। ये जो PAT cycle 4 के लिए और 109 ऐड हो गए, और पैट साइकिल 5 के लिए 110 ऐड हो गए। These are the addition, and that is you can say the widening and deepening of the sectors or and as well as disease in the subsequent PAT cycles. Then come to the number of assets. नंबर ऑफ एसेट्स कैसा कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज ये जो स्लाइड्स है मैं डायरेक्टली ब्यूरो एनर्जी एफिशिएंसी का जो भी प्रेजेंटेशन है वहां से ले, थैंक्स टू ब्यूरो एफिशिएंसी एंड पैट मैकेनिज्म, क्योंकि अलग सा कुछ मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो भी गाइडलाइंस है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। नंबर ऑफ एसेट्स दैट इज स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन नोटिफाइड फॉर द टारगेट ईयर माइनस स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन अचीव्ड इन द टारगेट ईयर। जो भी आपको स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन टारगेट दिया है इन द नोटिफाइड टारगेट ईयर में, और जो आपने अचीव किया है इन द टारगेट ईयर एक्चुअल, इसका जो डिफरेंस एंड द प्रोडक्शन ऑफ द बेसलाइन ईयर। नॉर्मली कंफ्यूजन होता है हर एक डेजिग्नेटेड कंज्यूमर को कि प्रोडक्शन क्या लेना है, तो प्रोडक्शन आपका बेसलाइन ईयर का ही लेना है, नॉट अ असेसमेंट ईयर प्रोडक्शन। असेसमेंट ईयर का प्रोडक्शन ये नेक्स्ट साइकिल के लिए बेसलाइन है और वो अपना नेक्स्ट साइकिल में यूज होगा, बट दिस इज द फॉर्मूला। देन assets are issued when energy efficiency improvements surpass targets. assets कब इशू होगा सर, अगर आपने जो टारगेट दिया था उससे अच्छा काम किया, उससे ज्यादा आपने अचीव किया, मींस उससे एनर्जी लेवल कम कंज्यूम किया, उस केस में जो भी डिफरेंस है आपका टारगेट एंड ओवर अचीव, वो डिफरेंस में आपको एसेट्स मिलेगा। विथ 1 मेट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 एसेट्स। 1 मेट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्वल टू 1 एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स, एंड इट इज इक्वल टू 10⁷ किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। 10⁷ किलो कैलोरी जो भी आपका एनर्जी कंजम्पशन है, चाहे वो कोल से हो, चाहे वो जो भी इलेक्ट्रिसिटी से हो, चाहे वो डीजल से हो, चाहे वो पेट्रोल से हो, जो भी आपका एनर्जी है वो एक ही यूनिट में कन्वर्ट किया है 1 टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, उसका रिस्पेक्टिव कैलोरी की वैल्यू मेजर करके, दैट इज 10⁷ किलो कैलोरी मींस 1 MTOE, एंड इट इज इक्वल टू 1 एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट। बैंकिंग ऑफ assets allowed during each cycle means first cycle assets to the second cycle assets to their respective third cycle। इस साइकिल कैसा चेंज हो रहा है हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट साइकिल सेकंड साइकिल के लिए 6th साइकिल आएगा पैट साइकिल, वो हम लोग देख लेते हैं। लाइकवाइज उसका रिस्पेक्टिव नेक्स्ट साइकिल एंड तक या कंप्लायंस पीरियड तक आप एसेट्स को बैंकिंग करके रख सकते हैं। Then how this price is find out in the PAT cycle 1, no formula दिया है, that is a price of 1 metric ton of oil equivalent
equal to, that is WC. WC means weightage of coal. कोल का वेट क्या हो लिया गया, and price of coal. Price of F grade coal declared by Ministry of Coal. Then plus वेटेज ऑफ ऑयल, ऑयल कितना कंज्यूम किया और ऑयल का क्या प्राइस है, दैट इज डिक्लेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस. एंड थर्ड वन इज द, इफ अगर समझो गैस भी आप कंज्यूम कर रहे हैं आपके यूटिलिटी में, इंडस्ट्री में, दैट इज वेटेज ऑफ द गैस एंड द प्राइस ऑफ गैस डिक्लेयर्ड बाय नेचुरल पेट्रोलियम नेचुरल. एंड देन लास्ट इज वेटेज ऑफ ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी. ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी कुछ कंज्यूम कर रहे हो आप एडिशनली, तो वो electricity into price of electricity. Normally to find out the WC, amount of coal consumed by all DCs in MTOE and total divided by total energy consumed by all DCs in MTOE. Trading of asserts, the value per metric ton of oil equivalent identified for the first cycle is 10,968. तो सेकंड साइकिल के लिए जो आइडेंटिफाइड रहेगा उसके हिसाब से रहेगा, अदरवाइज द सेम प्राइस विल कंटिन्यू. फॉर ट्रेडिंग ऑफ एसेट्स, नो फ्लोर प्राइस और परफॉर्मेंस प्राइस हैज बीन डिफाइंड एज द प्राइस ऑफ एसेट्स शैल बी डिस्कवर्ड एट द पावर एक्सचेंज. देखिए नॉर्मली क्या होता है, एक फ्लोर प्राइस फिक्स होता है, बट यहाँ पे एसेट्स दैट इज एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट ट्रेडिंग मैकेनिज्म में कोई फ्लोर प्राइस फिक्स नहीं किया गया है. तो ये जो प्राइस आइडेंटिफाई होगा डिपेंडिंग ऑन सप्लाई एंड डिमांड. जो भी ओवर अचीवर्स है वो मार्केट में आएंगे सेल करने के लिए थ्रू पावर एक्सचेंज, और जो भी परचेसर है वो भी पावर एक्सचेंज थ्रू परचेस करने के लिए. वहां पे जो भी प्राइस, जो भी बेचने वाला जो प्राइस लगाया और लेने वाला कुछ प्राइस लगाया, उसके हिसाब से वो जो प्राइस आइडेंटिफाई होगा फाइनली, दैट इज डिस्कवर्ड ऑन दैट ट्रेडिंग सेशन, रेस्पेक्टिव ट्रेडिंग सेशन. Asserts shall be brought by DCs for compliance only, and after submission of B to the meeting the compliance, it will stand expired. Means जो asserts जो अंडर अचीवर है, वो जो भी वो लोग परचेस करेंगे asserts, वो कंप्लायंस के लिए परचेस करेंगे, और एक बार उन्होंने जो कंप्लायंस के लिए परचेस करके फॉर्म डी सबमिट किया तो वो asset जो भी परचेस किया वो एक्सपायर हो जाएगा, उसका कोई उसका ऊपर डिमांड नहीं रहेगा. Designated consumers to whom the asserts are issued can sell them at power exchanges, and balance asserts can be utilized for compliance of their respective next cycle. यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, आपको समझो आपके सेम यूटिलिटी है अंडर वन अम्ब्रेला, आपका एक यूनिट और अचीवर है, मीन्स गेन साइड अचीव किया, एंड फॉर एग्जांपल सेकंड यूनिट जो भी आपका अंडर अचीवर है उसमें अगर एसेट्स परचेस करना है तो आप म्यूचुअली एक्सचेंज नहीं कर सकते. ये एसेट्स आपको एसेट जो भी है एक्सचेंज थ्रू ही बाय करना है, ये बहुत ही क्लियर है. Validity period for asserts issued during the current cycle is till the completion of the compliance period of the respective DC's next cycle. Normally these are the stakeholders, that is regulator is a Ministry of Power, administrator is a Bureau of Energy Efficiency, implementer is a designated consumers. Implementer कौन रहेगा, जो भी designated consumer है वो implementer रहेगा. And state nodal agency is a adjective, means state nodal agency की भी कुछ responsibility यहाँ पे, that is state designated agency and the CRC in the Maharashtra यहाँ पे आएंगे, that is the state designated agency is a Maharashtra Energy Development Agency, and ACRC is a Maharashtra Electricity Regulatory Commission, यहाँ पे उनका रोल आएगा. And verifier is the MPEL accredited energy auditor. इसका जो वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन है, वो जो ब्यूरो ऑफ एफिशिएंसी जो लिस्ट अपलोड किया है उनके साइट पे, उसी में से आपको सेलेक्ट करके आपको मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन कराना है. ट्रेडिंग रेगुलेटरी रजिस्टर,
registry is that is CRC, Central Regulatory Authority, and Power, that is POSOCO. यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, अंडर पैट में जो मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन हो रहे हैं, यहाँ पे ऑडिटिंग फर्म जो है, जो ऑडिटिंग जो है वो एक्चुअल कुछ भी मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ओनली जो भी डाटा सोर्स है आपने बेसलाइन में डिक्लेयर किया, ये डाटा सोर्स यहाँ पे रहेगा, यहाँ से रहेगा, ये डिटेल है, और उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लोग हर एक डाटा चेक करके उनके रिपोर्ट में लाएंगे, बट हर एक डाटा चेक करने का अथॉरिटी ऑडिटिंग फर्म को है। बट इसी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंडर देयर इज अ मैंडेटरी ऑडिट आल्सो। जो भी डीसीज है, जब भी वो डिक्लेयर किए हैं विद इन 18 मंथ्स, उनको फर्स्ट मैंडेटरी ऑडिट कराना है, दैट इज एक्रेडिटेड एनर्जी ऑडिट फर्म से ही कराना है। जो भी बाहर का ऑडिट फर्म नहीं चलेगा। जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो भी आइडेंटिफाई किया है एक्रेडिटेड एनर्जी फर्म, उनसे ही मैंडेटरी ऑडिट करना है। और आपने फर्स्ट टाइम एक बार जो ऑडिट किया है, उसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज एवरी 3 इयर्स आपको ऑडिट कराना है, मैंडेटरी एनर्जी ऑडिट। ये डिफरेंस है मैंडेटरी एनर्जी ऑडिट में और मॉनिटरिंग वेरिफिकेशन में। Then this is a key timeline, generally in details given in this slide. This is a timeline for the each activity. For example, action plan submission 3 months. Within 3 months from the notification, that is जब भी एक बार नोटिफिकेशन आया 23 जून तक, within 90 days you can submit your details to the home to submit, that is SDA, designated state designated agency and Bureau of Energy Efficiency at the center. And form 1-3 and performa submission means sector wise अलग फॉर्म है। means for example पावर प्लांट के लिए अलग रहेगा, टेक्सटाइल के लिए अलग रहेगा, देन सोलर के लिए अलग रहेगा, रिफाइनरी के लिए अलग अलग, उनके जो डाटा के हिसाब से फॉर्म्स अलग है। ये जो फॉर्म्स उनको रिस्पेक्टिव परफॉर्मा फॉर्म बोलते हैं उसको, वो फॉर्म आपको within 3 means yearly submission of form 1 within 3 months from the financial year। जब भी फाइनेंशियल ईयर आपका कंप्लीट हुआ, मींस फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा नॉर्मली 31st March, before 13 June you can submit this all details through PATNet portal। PATNet portal का यूजर आईडी एंड पासवर्ड दिया जाएगा आपका हर एक डीसी को, डेजिग्नेटेड कंज्यूमर। एनर्जी मैनेजर के लिए जो रिस्पेक्टिव एनर्जी मैनेजर जो है उस डीसी का, उनके लिए एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड रहेगा। एंड द स्टेशन हेड, फॉर एग्जांपल अभी आप आपका इंस्टीट्यूट अगर कॉलेज का कैंपस लेते हैं, तो आपका जो भी डेजिग्नेटेड कंज्यूमर है उनके लिए एक पासवर्ड और उसका जो आईडी और पासवर्ड रहेगा। और जो भी आप ऑथराइज किए हैं, फॉर एग्जांपल अगर उस कैंपस के प्रिंसिपल को अगर ऑथराइज किए हैं कि फॉर द एज अ हेड, देन आपके जो प्रिंसिपल का एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड रहेगा। नॉर्मली जो भी डाटा फिल करना है वो एनर्जी मैनेजर करेंगे, और जो भी हेड है अप्रूविंग अथॉरिटी वो चेक करके उसको सबमिट करेंगे। दिस इज द प्रोसीजर, बट यू हैव टू सबमिट विद इन 90 days फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फॉर्म ए, फॉर्म बी along with other documents, जो भी other documents वो 4 within 5 months from the conclusion of the target year for all sectors except railway and discoms। बाकी सेक्टर के लिए 5 मंथ का टाइम है, बट डिस्कॉम और जो रेलवे के लिए 6 मंथ्स का टाइम है, by end of July after the target year। means again this is activity of designated consumer and whom to submit, it is submit to again designated state designated agency and Bureau of Energy Efficiency, इनको submit करना है। Then submission of comments on form A, form B from the SDA, that is timeline is a 45 days। Within 45 days of the last date of submission of form A, that is by 15 September after the target year, state designated agency can submit any comments to the Bureau of Efficiency at the center। Then recommendation of energy saving certificates to the Ministry of Power, Government of India, the activity of Bureau of Efficiency and whom to submit, that is Ministry of Power, 2 months that time period, within 2 months from the date of the receipt of the comment from the
SDA, that is State Designated Agency or Bureau of Efficiency. That is, these timelines are fixed by 15 November. Issuance of energy saving certificates by the Ministry of Power, that is timeline is 45 days. Within 45 days from the date of receipt of recommendation of energy saving certificates from the Bureau of Efficiency, that is by end of January, that is activity of Ministry of Power. Then Form D submission, that is 8 months. Within 8 months from the last date of submission of Form A, that is end of March, and it is activity of DCs. And whom to submit? To the State Designated Agency and the Bureau of Efficiency. Now, due to this COVID-19 pandemic situation, there is some gap in the timeline. They will notify by the Bureau of Efficiency accordingly to the all disease. Accordingly, we can comply it. So, all disease, it is mandatory to follow it. Suppose once notified these timelines or due to any change in timelines, accordingly, we will not follow it, then it is treated as a non-compliance and eligible for the penalty as per the provision in the Energy Conservation Act 2001. Then come to the normalization. What is a normalization? Normalization means a process of rationalization of energy and production data of a designated consumer to take into account changes in quantifiable terms and impact of energy performance under equivalent conditions. It is a streamlining process by which any DC is not subjected to undue advantage or disadvantage to the factors beyond the control of the DCs. ये दोनों चीज देखा जाएगा ड्यूरिंग नॉर्मलाइजेशन फैक्टर. किसी डेजिग्नेटेड कंज्यूमर को कोई हम लोग बोले कि कोई उनका कोई गलती नहीं है, उनका कंट्रोल के बाहर है, उस केस में ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर मिलेगा. हम लोग नेक्स्ट स्लाइड से एक बहुत अच्छा एग्जांपल देके समझाया है डॉक्टर अशोक कुमार फ्रॉम ब्यूरो ऑफ एफिशिएंसी. वही स्लाइड में यहाँ पे आपको समझाऊंगा. Process, formation of sectorial, sub-sectorial technical committee, consultation with stakeholders, identification of factors, then integration with the reporting format performa, validation with the real data. ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है. नॉर्मलाइजेशन क्या है यहाँ पे इस स्लाइड से बहुत ही क्लियर किया है. इज डॉक्टर अशोक कुमार फ्रॉम ब्यूरो ऑफ एफिशिएंसी, ये बहुत अच्छा समझाते हैं. आई विल ट्राई आल्सो समझाने का वही सेम टेक्निकल लैंग्वेज में. सी व्हाट इज इन द बेसलाइन. दिस इज अ फैमिली प्रोफाइल. दिस इज रियल एग्जांपल, लाइव एग्जांपल लेके समझाया है. समझो कोई भी डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स, यहाँ पे एक फैमिली लिया है, दैट इज बेसलाइन ईयर में ये मैरिड कपल है. उनका गैस सिलेंडर का कंज्यूमेशन है पर मंथ 14 kg. आफ्टर 3 years मींस असेसमेंट ईयर उनको टारगेट दिया. जैसे पैड साइकिल नॉर्मली 3 years का साइकिल है, उनको टारगेट दिया फॉर एग्जांपल 12 kg का. मींस आपको 2 kg रिडक्शन करना है. ओके, बट यहाँ पे क्या हुआ, जो डेजिग्नेटेड कंज्यूमर का कोई गलती नहीं है, मैरिड कपल है. इन द टारगेट ईयर देयर इज अ चाइल्ड, एडिशन ऑफ अ चाइल्ड इन द फैमिली. तो क्या होगा, वो चाइल्ड का, जो बच्चे का भी कंज्यूमेशन बढ़ेगा. तो ये जो कंज्यूमेशन है वो आपको ठीक से नोट करके रखना है. ये एग्जाम्पल के लिए ऐसे कोई भी इंडस्ट्री में समझो आपके जो कंट्रोल में नहीं है, ऐसे कुछ प्रोसेस या कुछ एडिशन है, कुछ और कुछ है, तो वो डिटेल आपको नोट करके रखना है विथ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन. तो आपको ड्यूरिंग वेरिफिकेशन आपको प्रोड्यूस करना है, या बेस्ट वे एडवांस में आप स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी जो है, दैट इज इन द सपोज स्टेट वाइज इन द महाराष्ट्र, मेडा एंड ब्यूरो, उनको एडवांस में जब भी ऐसा कुछ चेंजेस है, अगर लेटर लिख के उनको आप इंफॉर्मेशन देते हैं, दैट इज द बेस्ट. क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है आपको
मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट में ऐड करने के लिए यूज होगा, एंड उस हिसाब से जो एम्पेल्ड एग्रीड एनर्जी ऑडिट फॉर्म है वो आप इस डॉक्यूमेंट में देखिएगा, अकॉर्डिंगली दे कैन मेक अ रिपोर्ट्स। यहाँ पे 3 क्या केस हो सकते हैं? नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस ऑफ द रैशनलाइजेशन फैक्टर्स बिहाइंड द कंट्रोल ऑफ अ डीसी, इंक्लूड एडिशनल consumption due to the child नॉर्मलाइजेशन। इन द सिनेरियो 1 में क्या हुआ है? चाइल्ड कंजम्पशन से 8 केजी, आपको टारगेट दिया था 12 केजी का, बट आपने 20 केजी कंज्यूम हुआ है। बट सिनेरियो 1 में क्या हुआ है? 8 केजी ये उस बच्चे का कंजम्पशन है, आपका नहीं है, कपल का। बट ये आपको ठीक से नोट डाउन करके रखना है, कैसा हुआ 8 केजी बच्चे के लिए। इस केस में क्या हुआ? द कपल्स कंजम्पशन इज अ 12 केजी, जस्ट मेट द टारगेट। 20 हुआ है बट उसमें 8 केजी बच्चे का, इसके लिए आपका टारगेट था 12 केजी। यहाँ पे आपका जस्ट आपने जो भी टारगेट है वो मेट किया है, मीन्स आप कंप्लाइड किए हैं, बस। आपको कोई पेनल्टी भी नहीं आएगा, कोई इशर्ट्स लेना भी नहीं है, कुछ देना भी नहीं। सिनेरियो 2 में चाइल्ड कंजम्पशन इज अ सेट 10, चाइल्ड का कंजम्पशन 10 हुआ है, आपका टोटल कंजम्पशन 20 है बट आपका टारगेट 12 था। चाइल्ड का कंजम्पशन 10 है, मीन्स आपका कंजम्पशन कितना हुआ? 10 केजी। द कपल्स कंजम्पशन इज 10 केजी, दैट इज ओवर अचीव्ड, मीन्स आपको टारगेट था 12 केजी, आपने 2 केजी कम कंज्यूम किया है, तो आपको उसका इशर्ट्स मिलेंगे इक्विवेलेंट। द कपल हैज मेड अ एफर्ट टू रिड्यूस द गैस कंजम्पशन, तो आपका इस केस में आपको इशर्ट्स मिलेंगे, जो भी आप ट्रेड कर सकते हैं या उसको बैंकिंग कर सकते हैं नेक्स्ट साइकिल में। इन थर्ड सिनेरियो, चाइल्ड कंजम्पशन इज अ से 4 केजी। यहाँ पे क्या हुआ देखिए, टोटल कंजम्पशन इज अ 20, बट चाइल्ड का कंजम्पशन 4 केजी है। इसका मतलब कपल का कंजम्पशन कितना हुआ? 16 केजी। मीन्स आपका टारगेट था 12 केजी, बट कपल ने 4 केजी एक्स्ट्रा कंज्यूम किया। मीन्स इस केस में आपको जो 4 केजी का जो भी डिफरेंस है, जो भी इक्विवेलेंट इशर्ट्स बनता है, वो आपको मार्केट से खरीदना है और कंप्लाई करना है। अगर आप नहीं कंप्लाई करते, देन यू आर एलिजिबल फॉर द पेनल्टी। ये नॉमिनेशन कैसा होता है? जस्ट एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके समझाया है, बट दिस इज एप्लीकेबल टू योर ईच एंड एवरी इंडस्ट्री और यूटिलिटी, डिपेंडिंग ऑन आप एनर्जी कंजम्पशन कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ एडिशन हो रहे, तो आपको सेपरेटली नोट करके रखना है। एंड एडवांस में आपको अगर आपने इन्फॉर्म करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, एंड इट विल बी टेकन इनटू केयर ड्यूरिंग द मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन। अब इस पैट साइकिल 1 अचीवमेंट, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, पैट साइकिल 1 में 8 सेक्टर थे, एंड दीज आर द नंबर ऑफ डिसीज finally monitored and verified. The saving about 8.67 metric ton of oil equivalent from the assessed of the 427 disease. And CO2 mitigation is a 31 million tons. This is a sector-wise saving achievement. Normally, there is a जो भी एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में थर्मल पावर प्लांट, उनका नंबर ऑफ डीसी भी ज्यादा है और उनका अचीवमेंट भी ज्यादा है, सेविंग अचीवमेंट्स। एंड दिस इज अ परसेंटेज सेविंग, एक पिक्टोरियल व्यू में दिखाया है सेक्टर वाइज एनर्जी सेविंग कैसा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगेन थर्मल पावर प्लांट इज 3.06 million, that is 35% contributes in the saving, and for the cement is a 17%, then aluminum is a 9%। ये पिक्टोरियल व्यू में यहाँ पे दर्शाया है, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। देन रियलाइज इम्पैक्ट ऑफ पैट साइकिल 1, जो भी हम लोगों ने बात किया, that is energy saving is 8.67 million ton of oil equivalent, that is around it contributes 5635 megawatt। अगर मेगावाट में कन्वर्ट करते तो इतना सेविंग हुआ है। That is 1.25% of India's total primary energy supply। Just imagine पैट साइकिल का अचीवमेंट, एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है। मैं पर्सनली ऑल्सो मैं बोलना चाहूंगा, एक अच्छा स्टेप था मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंदर ये जो पैट साइकिल
ला के दिस इज अ आउटकम. दैट्स व्हाई दिस पैट साइकिल इज अ बहुत ही सक्सेसफुल है इंडिया में. तो इसी के लिए जो पैट साइकिल चलेगा आगे भी. Emission reduction around 31 million tons of CO2, that is 1.93% of India's emission. Skill development, capacity building around 5,000 plus engineers and operators. 13,718 energy auditors and managers का certification मिला है. Under there is under scheme of एक जो बी का स्कीम है अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, उन्होंने अराउंड 13,718 एनर्जी ऑडिटर्स और मैनेजर्स क्वालिफाई किए हैं. 219 accreditations are given by Bureau of Efficiency. Accreditation के लिए अलग सा प्रोसीजर है, वो पूरा आपने अगर कंप्लाई करते हैं तो आपको accreditation भी मिलेगा. Then savings around rupees 9,500 crores from the saved energy consumption and avoided generation. And investment, increased investment for energy efficiency technology for the domestic manufacturing, around rupees 24,517 crore invested. PAT cycle 2 जो sector wise जो भी these three sectors are addition in PAT cycle 2 and total number of this is 621. PAT cycle 2 baseline year is 14-15 and assess PAT cycle is 16 to 19 and assessment year is 2018-19. Total energy consumption from 11 sectors is 2 to 7 ton of oil equivalent. Target national target is 8.869 MTOE at the end of the second phase. This is जो उन्होंने ये किया, इसका शायद उन्होंने डिटेलिंग किया है, कुछ डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल किया है ब्यूरो ऑफ एफिशिएंसी, द अचीवमेंट ऑफ पैट साइकिल 2 ऑन देयर वेबसाइट. ये जो स्टार्टिंग पैट साइकिल 2 का एक उन्होंने एक एस्टिमेट किया था, वो फिगर्स यहाँ पे है, कितना अचीव कर पाएंगे. एनर्जी सेविंग अराउंड 11,407 मेगावाट, that is 7.5 million tons of oil equivalent, 2.09% of India's primary energy, and around 30,000 crore projected इन्वेस्टमेंट. इसका डॉक्यूमेंट आउटकम आया है, ऑलरेडी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है मिनिस्ट्री ऑफ ब्यूरो ऑफ एफिशिएंसी अपने वेबसाइट पे. देन कम टू द पैट साइकिल 3. यहाँ पे एडिशन 116 जो भी डेडिकेटेड कंज्यूमर आइडेंटिफाई किया है अंडर डिपनिंग थर्मो पावर सेक्टर में 37, सीमेंट में 14, एल्यूमिनियम 1, पल्प पेपर 1, iron and steel 29, section 34. 116 new addition of DCs and energy consumption million ton around 3417 and energy saving target given from this 116 DCs is 1.1 million ton of oil equivalent. See this slide again important. Normally there is a question, for example पैट साइकिल 1 पैट साइकिल 2 है तो पैट साइकिल 3 में हम लोग रहेंगे, कहाँ पे रहेंगे वगैरह वगैरह. दिस स्लाइड शोज इन डिटेल. पैट साइकिल 1 स्टार्टेड इन दैट इज असेसमेंट इज 14-15. 15-16 में उसका मॉनिटरिंग वेरिफिकेशन हो गया. देन फॉर द नेक्स्ट साइकिल पैट साइकिल 1 में जो भी डिजिटल कंज्यूमर थे ऑल आर एलिजिबल फॉर द पैट साइकिल 2 and addition of some additional DCs due to widening and deepening. तो assessment year 18-19 means 18-19 year में assessment जो assessment year था means 19-20 में उसका monitoring verification होके ये पैट साइकिल 2 होगा. But meanwhile there is a पैट साइकिल 3 started, 4 started, 5 started. means जो पैट साइकिल 2 स्टार्ट का जो असेसमेंट ईयर था 18-19 बट सब्सिक्वेंट नेक्स्ट ईयर 19-20 में पैट साइकिल 3 का आ गया, पैट साइकिल 4 का 20-21 आ गया, पैट साइकिल 5 का 20-21-22 आ गया. मींस पैट साइकिल 2 में जो भी डिजिटल कंज्यूमर है वो दे आर एलिजिबल फॉर द पैट साइकिल 6 जो भी अभी स्टार्ट हो गया है 18 दैट इज 22-23 में उसका असेसमेंट ईयर है. मींस
2021, 21-22, 22-23 तीन साइकिल 3 इयर्स का साइकिल होता है. दैट्स व्हाई इट इज असेसमेंट इज 20. एंड पैट साइकिल 3 का जो भी कंज्यूमर से डिसीज है उनका पैट साइकिल 7 में इंक्लूड होगा. ऐसा ये बढ़ते जाएगा. फोर्थ का 8 में एंड फोर्थ का 9th में. ऐसा ये साइकिल कंटिन्यूसली चलते रहेंगे पैट साइकिल्स. Then come to the penalties and ensure fulfillment of objectives of PAT scheme. Critical to meet India's commitment under indices complying the provisions Energy Conservation Act. Penalties on non-compliance. ये penalty basically उसके ऊपर लागू होगा जो non-compliance है. हम लोगों ने देखा non-compliance किस कभी होगा हम लोगों ने देखा है. अगर आपने जो भी उसके प्रोविजन के हिसाब से या इसेट्स की अगर बात करते हैं, जो अगर आपको अंडर अचीवर्स है, आपने अगर इसेट्स परचेस करके उसको कंप्लाई नहीं किया तो आप पेनल्टी के लिए एलिजिबल है. जो भी पेनल्टी है आगे मैं दिखा रहा हूँ आपको. In order to enforce various provisions of Energy Conservation Act 2001, penalties and various provisions are stipulated in Chapter 8 एंड चैप्टर 9. ये जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के जो चैप्टर्स है अंडर सेक्शन चैप्टर 8 के अंडर सेक्शन 26, 27, 28, 29 ये डिटेल में पढ़ना पड़ेगा किस किस इसमें ये पेनल्टीज लागू है. एंड अंडर चैप्टर 9, 30 एंड सेक्शन 30 to 45. If any person fails to comply with the provisions of clause N of section 14, he has to liable to penalty which shall not exceed 10 lakh rupees. देखिए अंडर सेक्शन 26 पेनल्टी क्लॉज में आप अगर नॉन कंप्लायंस है तो आपका फिक्स अमाउंट 10 लाख रहेगा. इज अ फिक्स अमाउंट एंड एडिशनल पेनल्टी शैल बी इम्पोज्ड व्हिच शुड नॉट बी लेस देन द प्राइस ऑफ एवरी मेट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट. फॉर एग्जांपल आपने 100 इसेट्स अगर आपका अंडर अचीव है, अगर आपने ट्रेडिंग करके परचेस नहीं किया जो भी मार्केट प्राइस से, तो भी जो प्राइस फिक्स किया है ब्यूरो ऑफ एफिशिएंसी, जैसे पैट साइकिल 1 में 10,968 फिक्स किया, 100 to 10,968 प्लस 10 लाख. एंड अगेन अगर आपने उसका कंप्लायंस पीरियड आपको डिफाइन कर दिया है, इस पीरियड तक आपको पेनल्टी भरना है, उसके बाद में अगर नहीं भर रहे तो एवरी डे देयर इज अ 10,000 रुपीज पेनल्टी. दीज आर द प्रोविजंस अंडर Energy Conservation Act 2001. In case any amount payable under this section is not paid, then it may be recovered as an arrear of the land revenue. जो भी आपका asset है उससे वो recover किया जाएगा. These are the provisions. A way forward by cumulative the PAT 1 cycle का उसका detail. This is normally how this happens. PAT cycle 1 का एक example दिया. 2007-10 तक ये baseline study हुआ. आपका पैट साइकिल 2 बिगिंस हुआ 2012 में. 12 से 15 तक इम्प्लीमेंटेशन था. 14-15 इज अ मॉनिटरिंग वेरिफिकेशन एंड दिस इज अ असेसमेंट ईयर. उसके बाद में मॉनिटरिंग वेरिफिकेशन एंड कंप्लायंस करना है. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है. दिस इज बेसिकली कंसीडर फॉर अ थर्मल पावर प्लांट. नॉर्मली फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टारगेट सेटिंग फॉर द पावर प्लांट इज अ नेट हीट रेट, quality of coal, GC of coal, ash content, plant load factors and बहुत सारे factors है, but these are the major factors. यहाँ पे देखिए to fix the band or the target. For example, आपका डिजाइन नेट हीट रेट से आपका एक्चुअल ऑपरेटिंग नेट हीट रेट अगर डिविएशन इक्वल टू और लेस देन 5% है तो आपका रिडक्शन टारगेट अराउंड 10% मिलेगा. अगर आप डेविएशन 5 मोर देन 5 एंड लेस देन 10% में है, आपका डिजाइन नेट हीट रेट से एक्चुअल ऑपरेटिंग नेट हीट रेट, देन आपको 15% का टारगेट मिलेगा. मीन्स क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर आपका डेविएशन ज्यादा है तो टारगेट भी आपका ज्यादा रहेगा. यहाँ पे देखिए नॉर्मली इन एनी पावर प्लांट हम लोग ग्रॉस हीट रेट देखते हैं, बट यू कैन सी द नेट हीट रेट. अगर समझो सिर्फ ग्रॉस हीट रेट देखते हैं, क्योंकि ये जो नेट हीट रेट मींस आपका इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल एनर्जी और सभी इंक्लूड होगा टू मॉनिटर एंड टारगेट एंड टू अचीव.
ग्रॉस हिट रेट 2500 प्लांट 1 का है एंड प्लांट 2 का 2445। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, ग्रॉस हिट रेट कम 2445 है तो ये बेस्ट यूनिट है। सिर्फ अगर ग्रॉस हिट रेट देखते हैं तो सिर्फ अगर हम लोग एपी से देखते हैं, दैट इज ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन, प्लांट 1 इज 8%, प्लांट 2 इज 9.7%। इस केस में वी कैन से दैट सिर्फ अगर एपी से देख के अगर हम लोग अगर कंक्लूजन करते हैं तो प्लांट 1 इज अ बेटर। बट नेट हिट रेट क्या है, नेट हिट रेट इक्वल टू ग्रॉस हिट रेट डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन। ये कैलकुलेशन है, ये आपका टोटल पिक्चर क्लियर करेगा। इसके लिए आपको कभी भी आपको देखना है तो नेट हिट रेट देखना है पावर प्लांट के लिए। दैट इज ये अगर कैलकुलेट करते हैं, प्लांट 1 इज 2717 किलो कैलोरी पर kcal एंड प्लांट 2 इज 2709, मींस प्लांट 2 इज बेटर इन ऑल रिस्पेक्ट। और एक एग्जांपल, एक केस इवैल्यूएशन दिया है, एक्स कंपनी, वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड। अगर सिर्फ हम लोग ग्रॉस हिट रेट देखते हैं तो 2305, 2300, 229 पे हम लोग बोलेंगे प्लांट जेड इज द बेस्ट, जेड लिमिटेड इज द बेस्ट। बट सिर्फ ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन देखते हैं तो हम लोग बोलेंगे एक्स लिमिटेड इज द बेस्ट। अगर नेट हिट रेट अगर देखते हैं तो आप कैलकुलेशन करके फाइनली यू कैन कंक्लूडेड प्लांट और कंपनी वाई इज द बेस्ट compared to 3 in the comparison करते हैं तो Y limited is the best. How to calculate specific energy consumption? Net energy input into the designated consumer's boundary, total output evaluated, measure output reduction in the designated consumer. ये फॉर्मूला है उसका। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 metric ton of oil equivalent to 1 into 10⁷ किलो कैलोरी इक्वल टू 1 ESERTS, 1 एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट। ये कन्वर्शन फैक्टर है। फाइनली सभी सेक्टर में सभी डिसीज के लिए आपको फाइनली 1 टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट में ही मेजर किया जाएगा। उसका फॉर्मूला डाल के आपने एक ही यूनिट में उसका कन्वर्ट करके फाइनली, दैट्स व्हाई आप अगर ट्रेडिंग में जाते हैं तो ओनली वहां पे जो अवेलेबल है ESERTS से। दैट्स व्हाई किसी सेक्टर में किसी सेक्टर से आप एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट थ्रू पावर एक्सचेंज आप खरीद सकते हैं। आपको मालूम नहीं होगा आप किस सेक्टर से खरीद रहे हैं और किससे खरीद रहे हैं। मार्केट डिजाइन, this is a designated consumer or obligation to improve energy efficiency. Energy efficiency targets are percentage age reduction in the energy specific energy consumption expressed in the absolute saving. Various plants in the industry clustered on the basis of their specific energy consumption. जो अलग अलग सेक्टर के लिए उनके डिपेंडिंग ऑन देयर प्रोडक्शन और जो क्या है उसके हिसाब से उनका स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन रहेगा। Designated consumer can meet the target by undertaking the energy efficiency measures themselves. आप दो तरीके से मीट कर सकते हैं, वेरियस एनर्जी मेजर्स लेके आप मीट सकते हैं और सेल देयर ऑब्लिगेशन टू समवन एल्स। अदरवाइज आप अगर नहीं कर रहे हैं, अगर आप अंडर अचीवर हैं तो आप मार्केट में जाके जब भी ट्रेडिंग रहेगा तभी आप सर्टिफिकेट्स लेके वो कंप्लायंस पीरियड या जो पैड साइकिल आप कंप्लाई कर सकते हैं। दिस इज जनरल कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या रहेगा वो हम लोगों ने देखा इन डिटेल में। ESERTS आर इश्यूड, हम लोगों ने देखा कि व्हेन एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव्ड सरप्लस, जो एक्स्ट्रा एफर्ट लिया है और गेन साइड में वो ESERTS इशू उसको ESERTS मिलेगा और जो अंडर अचीवर है वो ले सकते हैं। पार्शियल इश्यूएंस ऑफ ESERTS कैन बी अलाउड इन द बेसिस ऑन DC ऑन सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट ऑन स्कीम एडमिनिस्ट्रेटर, वो प्रोविजन भी है। रजिस्ट्री हम लोगों ने देखा, CRC पोसो हम लोग ट्रेड मैकेनिज्म हम लोगों ने मार्केट डिजाइन के अंडर पावर एक्सचेंज से हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। दिस इज जनरल हाउ मार्केट डिजाइन इज यहाँ पे टैबुलेट किया है। स्कीम एडमिनिस्ट्रेटर, देन स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी, डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स मींस जो भी एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री के अंडर जो डेजिग्नेटेड कंज्यूमर है उनका रोल यहाँ पे आएगा। Then a designated energy auditor, then registry, that is a CRC and POSOCO and power exchange. ये टोटल हाउ ये मार्केट डिजाइन करके पूरा ये जो एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स ट्रेड होगा उसका डिटेलिंग यहाँ पे दिया। नॉर्मली जो एक्चुअल इंस्टीट्यूशन डिजाइन किया है जो प्रपोज दी एक्चुअल में जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर अंडर दैट ब्यूरो ऑफ एफिशिएंसी इज अ मार्केट रेगुलेटर एंड
एडमिनिस्ट्रेटर उसके अंडर एसडीए है, देन देना है डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स है, देन ट्रेडिंग एक्सचेंज है दैट इज आईएक्स पीआईएक्सएल एंड सेंट्रल रजिस्ट्री दैट इज सीआरसी। ये टोटल जो इंस्टीट्यूशन डिजाइन किया गया है इस हिसाब से। Then detailed procedure for transaction of energy saving certificates. एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स जो भी है वो ट्रेडिंग मैकेनिज्म इज अ डेजिग्नेटेड कंज्यूमर दैट इज डीसी, उनको रजिस्ट्रेशन करना है एलिजिबल एंटिटी के लिए फ्रॉम डेजिग्नेटेड कंज्यूमर टू एलिजिबल एंटिटी। देन there is a issuance of electronic certificates of registration that is after complete scrutiny by registry or scrutiny by the registry after application of the forms। आपको फॉर्म भरना है, वो जो उसका मैं डिटेल आगे दे रहा हूँ। शेयर द लिस्ट ऑफ एलिजिबल एंटिटीज ऑन द पावर एक्सचेंज। पावर एक्सचेंज में पूरा एलिजिबल एंटिटी का डिटेल्स आएगा। अगर आपने डेजिग्नेटेड कंज्यूमर टू एलिजिबल एंटिटी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, यू आर नॉट, आपको ट्रेडिंग में हिस्सा लेना नहीं आएगा या बेचने के लिए या लेने के लिए। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टेप भी ध्यान रखना है डीसी टू एलिजिबल एंटिटी। दिस इज एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पैट साइकिल फ्रॉम डेजिग्नेटेड कंज्यूमर टू एलिजिबल एंटिटी। क्या क्या डिटेल्स देना, सेक्शन ए में पैट साइकिल ड्यूरेशन क्या है, देन डीसी रजिस्ट्रेशन नंबर, डीसी नेम, सेक्टर, स्टेट, नेम ऑफ द स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी इन द, जैसे कि उस स्टेट वाइज उसका डेजिग्नेट, प्लांट एड्रेस आना है, प्लांट हेड डिटेल्स आना है, प्लांट हेड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नंबर ऑफ इशर्स इश्यूड और टू बी परचेज। यहाँ पे अगर ओवर अचीवर है तो आपको जो इशू किया वो नंबर डालना है, उसका नंबर भी आएगा। अगर अंडर अचीवर है तो आपको कितना परचेज करना है, कितना, वो भी डिटेल आएगा जो एज पर योर मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन फॉर्म में डिटेल आएगा। पोस्टल एड्रेस रहेगा, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज सिग्नेचर रहेगा, जो भी ऑथराइजेशन दिया है बाय मैनेजमेंट उसके हिसाब से सिग्नेचर रहेगा। ये बाकी डिटेल्स है जो फॉर्म के, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, टाइप ऑफ, सेक्शन बी में टाइप ऑफ एप्लीकेंट, जो पोस्टल एड्रेस, टाउन, स्टेट, पोस्टल कोड, क्योंकि हर एक डेजिग्नेटेड कंज्यूमर का एक यूनिक कोड आएगा। जैसे कि डाउनलोड के लिए टीपीबी, थर्मल पावर। हेलो सर। यस सर, एनी क्वेश्चन और एनीथिंग इन डिटेल? यस, no, sorry to interrupt sir. Yes, sir, We no have the next session sir actually. Okay. So, yeah, we I will wind up finish now. by 12. It's okay, sir. Yeah, At yeah, what okay time? sir, ठीक है चलो। At what time? At 12 p.m. sir. Okay. Then details of fee and charges, ये डिटेल यहाँ पे दिया गया है। Then declaration form, these are general, जो भी अदर फॉर्म के साथ में होता है वो डिटेल्स यहाँ पे दिया है। Then come to the energy manager's responsibilities. Prepare an annual activity plan and present to management concerning financially attractive investment to reduce the energy cost. ये details responsibility यहाँ पे list है। I will share this presentation to Kale sir. Accordingly, you can avail that. Detail में आप जा सकते हैं, और उसके अलावा भी कुछ डाउट है, कुछ डिस्कशन, you can welcome to write to me or email me. I will clear one by one. Analyze equipment performance with respect to the energy efficiency. Ensure proper functioning and calibration of instrumentation required to assess level of energy consumption directly or indirectly. These are the responsibilities of energy manager. And coordinate nomination of management personnel to the external programs for any workshops or seminars or any compulsory, you can say the requirement of the Bureau of Efficiency or designated state designated agency programs. Then also establish and participate in the information exchange with other energy managers for the same sector through association. यहाँ पे एक आप रेपो बिल्ड कर सकते हैं सेम सेक्टर से दूसरा एनर्जी मैनेजर से बात करके, एक जो भी आपका जो प्रॉब्लम्स है शेयर कर सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस, वन प्रैक्टिस शेयर करके वी कैन इम्प्लीमेंट इन। दीज आर द ऑल ड्यूटीज ऑफ द एनर्जी मैनेजर्स। Report to B and state level designated agency once in a year. The information with regard to the energy consumed and action taken in the recommendations of the accredited energy auditor as per the B format.
and prepare a scheme for efficient use of energy and its conservation, and implement such schemes keeping in view of the economic stability of the investment in such firm manners as may be. यहाँ पे एक one thing I want to share. Suppose auditing firm has a given the recommendations, then utility can decide to implement all recommendations or not, because एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट में कहीं पे प्रोविजन नहीं कि सभी रिकमेंडेशन आप इम्प्लीमेंट करें. डिपेंडिंग ऑन द technical feasibility and economic feasibility, you can take a management can take decision to implement that energy saving or energy equipment efficiency project. The auditor responsibility to conduct internal audit of the individual equipment or system once in a year. Then duties of auditor duties: submit copy of the report to the energy manager with recommendation action plan. Keep record of calibration status of all energy measures and instruments. Be a team member of the external audit team. For ESCO's energy performance, contact process be verified for the monitoring and verification system and baseline and savings. This PAT cycle is easy to implement, robust and reliable, reduce tradability and liquidity, allows development of energy efficiency market, multiple trading opportunity, creation of demand in line with the existing structure and practices. This is all about from my side. If any question answer, I will happy to take, or someone want to share something for the benefit of, you can welcome. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Hello. Am I audible? Yes, sir. You're audible. Yeah. Thank you so much, sir, for the nice session. It was very informative and insightful. Sir, our participants have sent us some question. Yes, sir. With your permission, we'll move on to the question answer session, sir. Yes, yes, sir. Yeah, thank you, sir. Over to you, Professor Ratnam. Good morning, sir. Sir, there is one question. Ma'am, can you some loudly, please? I am not unable to hear you. Yes, sir. Am I audible now? Yes, sir. Yes, ma'am, please. Okay. Sir, there is this question. Are there any case studies available on NEET regarding implementation of PAT cycle process, or is there any training program for the same? Ma'am, there is a detailed all training session slides and information available on Bureau of Energy Efficiency site, ma'am. Including detail how PAT mechanism. There is a separate documentation is available, and if you want a case study particularly, that case studies are not uploaded for the general public, but procedure and information all is available at Bureau of Efficiency Ministry of Power's website. But you particularly want to how this form has been filled for the power sectors, or that details is also available. But आपको डाटा नहीं मिलेगा, किसी पावर प्लांट का डाटा वहाँ पे अवेलेबल नहीं मिलेगा मैम. But all case studies and all details are available at Bureau B site website. That is Bureau of Energy Efficiency. Bureau Energy Efficiency, sir. हाँ, Bureau of Energy Efficiency. BEE. Okay, sir. आप Thank अगर you so much. गूगल में Bureau of Energy Efficiency अगर टाइप करते हैं तो आपको वेबसाइट मिलेगा मैम, अगर आपको ये डिटेल. Otherwise you can write to me. I will give the all links of the Bureau of Efficiency regarding the energy auditor का जो भी list है, accurate energy audit का है, PAT mechanism का details, all I will share to you. Thank you so much, sir. Thank you so much for your guidance. Now I conclude our question and answer session. Over to you, Kale, sir. Okay. Thank you, ma'am. Now I request Professor Nikhil to propose the vote of thanks. Hello, am I audible, sir? Yes, sir. Thank you, Kale, sir. It's my privilege to propose vote of thanks on this occasion. I, Professor Nikhil VS, on behalf of MCT's Rajiv Gandhi Institute of Technology, Department of Mechanical Engineering, and on behalf of organizing committee of AICT AQI sponsored online 1-week short-term training program on recent trends in energy management audit, and my own behalf extend a hearty vote of thanks to Mr. Panduram Jilkote for accepting our invitation as a source person and sparing his valuable time with us. He has given good insights on the topic: PAT overview, origin of PAT, PAT cycle, PAT mechanism, market designs, institutional designs, and exerts trading process. Thank you so much, sir.
Now I request all participants to join the next section, which starts from 1 p.m. and is scheduled till 3 p.m. Finally, may I request the technical team to end the section. Thank you all. Okay, thank you, sir. Jalkude sir. Thank you very much. Thank you, sir. Yeah, yes, sir. Thanks. Yes, sir. Okay.